थैंक यू मिस्टर आशीष भाटिया जी, आप रोशनी लेकर आए हैं और आज यहाँ पर हमारे बीच में है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज मिस्टर आशीष भाटिया विद अ थंडरिंग अपलॉज प्लीज एवरीवन। Please say some few words. Thank you. A very educative talk. I will just tell you, a lot of doctors spend a lot of time in what we call continuous medical education. Now what they are doing is all the time educating doctors in smaller cities or towns to be able to save lives. Now very few doctors actually get into a program where they engage with patients to tell the patients about what are the good practices to follow. So I am 62 years old. I was 50 years old when I was posted in Escorts Hospital, which is owned by FORTIS. And one day I was uncomfortable, and the only reason I went to the hospital to get a checkup done was I said that if anything happens to me, everyone's going to say, what a fool, this chap has got an office in Escorts and he didn't take timely action. I went, I had 2 blockages, I had an angioplasty, so this is 12 years back. And soon after an angioplasty for 5-6 months, everyone's very worried, everyone takes all the precautions that you can think of. But then slowly, you get back into your groove. And then you forget, things, you stick to your medication, but all these good things about exercise, tobacco, alcohol, etc., that Dr. JASWAL spoke about, most people tend to forget that. So, one fine day, few months later, I told myself, I said, if something happens to me, it's actually going to be a very poor reflection on my treating doctor. No one's really going to know what I did wrong or did not do right. But they will always say that the doctor didn't do a good job. So I'm very clear in my mind that if I want to remain fit, one of the reasons I do it for, because I want that people should never think that my doctor didn't do a good job. So the doctors are doing an excellent job. That's half the battle. The other half lies with all of us. Every morning I get up and I go for a walk at Sukna Lake. This morning was a brilliant morning. I mean, Dr. JASWAL comes there often and I meet him very often at the lake. But sir, I'll show you the photographs. It was an amazing morning. I don't know, did anybody see the glow in the sky this morning? Yeah, it was something phenomenal. Yes, very, very beautiful. But anyways, ladies and gentlemen, I wish you good health. I wish you happiness. It's all within us. And I think, this thing about, open your heart with your friends, otherwise Dr. JASWAL will be grateful. I think, other than exercise, if I think there is a great important thing is to have friends whom you can talk to, whom you can unburden yourself with. It is priceless. Absolutely priceless. And one other thing, the moment you hold a grudge against anybody, it eats you more than you know it does. It's better to go and apologize to the person even if you're not in the wrong. But any grudge is destructive. So for me, I must stay fit so that my dog, who's done a good job, should not be seen as somebody who didn't do a good job. Exercise, for sure. And I would say, communication with people that care for you, to spend quality time, and last, hold no grudges, have no animosity. It does you no harm than you. So Dr. JASWAL, thank you very much. That was a wonderful talk. Thank you very much. Thank you so much. Couldn't get more practical with it. Thank you so much. That was very interesting. All right. Well, बारी आ गई है क्वेश्चन आंसर्स की सर, राइट? सो लेट्स डू दैट. बहुत सारा एक जार इकट्ठा किया गया, वहाँ पर उसमें सारे क्वेश्चंस हैं. सो वी विल नॉट बी एबल टू टेक अप ऑल ऑफ देम, इसीलिए ये तरीका अपनाया गया है. सो दैट्स ऑल फेयर. यहाँ पर एक जार है, सो विल टेक आउट फ्रॉम दैट एज वेल. और मुझे जो हैंड ओवर की है रैंडमली कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैंड ओवर किए गए हैं. सो आई एम गोइंग टू पिक अप फ्रॉम हियर एज वेल. और यहाँ से भी ले लेते हैं, वहाँ से भी ले लेते हैं. सो बहुत सारे अभी इकट्ठे किए ऑडियंस में से. सो
Okay, okay, perfect, perfect. Okay, so this one says, आप अपना प्रोफेशनल स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं? वेल, ये तो मुझे भी ख्याल आ रहा था बैठे बैठे जब आप स्ट्रेस की बातें कर रहे थे, तो काम का स्ट्रेस तो आपको भी होता होगा. So well, जिसका भी ये क्वेश्चन है, आई एम विद यू, सो प्लीज सर. This is to me? Yes, yes, आपके लिए. That's a very good start. I was not expecting it. I think in short मैं बोलूँगा दो चीज़ें. एक तो जो मैंने बोला मैं खुद भी करने की कोशिश करता हूँ. Because charity begins at home. How I learned it. आज से लगभग 33-34 साल पहले मैं स्मोक करता था. तो ओपीडी में बैठ के जिस भी पेशेंट को मैंने बोला कि तू सिगरेट बंद कर दे, वो ऐसे मेरी तरफ देखता था, स्माइल करता था, बिल्कुल कर देंगे, बंद कर देंगे. सो आई थॉट अगर मुझे ये एडवाइस देनी है तो आई शुड माई सेल्फ लर्न टू स्टॉप स्मोकिंग. एंड 19 जून 1991 दैट इज द डे व्हेन आई स्टॉप स्मोकिंग. वैसे जो मैं आज प्रीच कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस एवरीथिंग. एक चीज़ इस पे क्योंकि बुक्स में मेंशन नहीं है, वो मेरी अपनी फीलिंग है, जो मैं करता हूँ वो मैंने डिस्कस नहीं किया, बाकी सब कुछ ठीक है. वो है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हो, खास करके मेरे जैसा खतरनाक काम करते हो, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता. नहीं तो आपको हमेशा स्ट्रेस होता है, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा. मेरे को पूछे, मुझे डॉक्टर ने कहा कि इतना होना चाहिए. मैं ये सीरीज लगा के दिखाते हैं. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड योर इंटेंट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. आपको अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास होना चाहिए और हमेशा ये सोच के करो काम, खास करके सर्विस सेक्टर में, कि अगर मेरा भाई होता तो मैं क्या करता, या मैं टेबल पे होता तो व्हाट वुड हैव आई एक्सपेक्टेड. कि मुझे पता कार्डियोलॉजी में क्या होता है, मुझे क्या चाहिए था, वो अगर आप देते हो. क्योंकि एक स्टेज के बाद पैसा पूसा सब कुछ बेकार है. उसके बाद आपकी सेहत, और आप जब तक आपके माइंड में स्ट्रेस ना हो, आपकी सेहत ठीक नहीं रह सकती. तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बेस्ट चीज़ है ये सारा कुछ जिस शरीर को सारा दिन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए 2 घंटे दो और अपने इंटेंट बिल्कुल क्लियर करो. ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी आपकी ठीक है तो छाती ठोक के कह सकते हो कि कोई आपके काम पे, आपकी नाम पे, आपकी इज्जत पे उंगली नहीं उठा सकता. और वो सबसे बड़ी स्ट्रेस फ्री होगी. कोशिश जरूर करेंगे हम सब आपके लक्ष्य कदमों पे चले. वो कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. हम कोशिश जरूर करते रहेंगे सर. और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेंगे. In 2020, open heart surgery. Okay, I think I covered up. So green leaf vegetables is taken or not, and tomato or anar is taken or not. ये लेना चाहिए. तो ऐसा जो जिन लोगों को ब्लड थिनर्स, एंटीकोगुलेशन चल रहा होता है, एसिट्रोम या वॉर्फरिन, उन लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और टोमेटो वगैरह नहीं लेना होता, बिकॉज वो उसके फंक्शन से इंटरेक्ट करते हैं. तो ओपन हार्ट सर्जरी में अगर वेल चेंज हुआ है आपका, या किसी और रीज़न के कारण जो है वो एंटीकोगुलेशन चल रहा है, तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है. अदरवाइज ऑल कार्डियक पेशेंट्स मस्ट टेक वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग लीफी वेजिटेबल्स एंड मल्टी कलर्ड फ्रूट्स 2 to 3 times a day. Well, I hope that answers very clearly. बहुत ही अच्छा फोरम जहाँ पे स्ट्रेट कट आंसर्स मिल रहे हैं. ओके, सो यहाँ से अगला अगर निकालते हैं, लेट्स सी. Says congratulations to FORTIS कि इसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं.
क्या आप इनकी कॉस्ट के बारे में बताएंगे? क्या आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकेंगे? थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में। पहले तो जैसे मैं शुरू में बोला कि आई एम थैंकफुल टू फोर्टिस मैनेजमेंट, मिस्टर भाटिया वाज हियर, still here, yeah, very much. So I said I am thankful to Fortis management that they helped us develop this center of excellence of cardiac sciences here in Fortis. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्ल्ड की जो भी बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास इस समय अवेलेबल है ऑन शेल्फ। ऑन शेल्फ का मतलब ये होता है कि 24/7 क्योंकि ये लाइफ सेविंग डिवाइस की जब जरूरत पड़नी है तो इट इज़ रिक्वायर्ड देयर एंड देन इटसेल्फ। आप तो कि कल अरेंज कर लेंगे उतना वक्त हार्ट नहीं देगा। एंड आई मस्ट टेल यू Fortis Hospital Mohali is called Center Super Specialty in Heart. That means the focus is on heart. So we are lucky that we do not have paucity of funds and we have to develop all these facilities which are present hardly 1 to 2% of the hospitals in the world. As far as cost, again I am thankful to my management कि हम लोग hardly हार्डवेयर का सामान पे पैसा लेते हैं। We do not charge any extra for our skill or whatever, and they are at 1/40th the price which is charged for the people in those countries where these facilities are available. In fact, let me tell you, ये सवाल पूछा गया कि क्या आम आदमी अफोर्ड करता है कि नहीं करता। मेरा बैचमेट है, वो इज इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट इन वाशिंगटन DC। वो एक बार इंडिया आया हुआ तो मेरे पास आ गया तो मैंने उसको सारा दिखाया, कहता है कि सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड है। मैं कहा बिल्कुल है, कहता मैं भेज के इंडिया चेक किया। देन वी टॉक अबाउट द कॉस्ट। तो ਉਹਦਾ सवाल उल्टा सीधा मैं तो कि ये फैसिलिटीज इतनी सस्तियां तुझे दे किवें दिंदे? मैं कहा इस करके बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर मनी, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सानू पैसा चाहे घट दें लेकिन प्यार बहुत देते। Let me tell you, even most complex angioplasty की cost भी 5-5.5 लाख तो ज़्यादा नहीं होती। और let me again reiterate, ਆਪਾਂ अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में एक कार कट कर रही है ना तो उन्हें भी जो cost निकल आती। Problem is we have not planned for that expenditure ever in our life. That's where the things are. अगर आप 5 lakhs भी अपनी लाइफ में अलग रखें, हर चीज़ के लिए रखा होता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए, ड्रेसेस के लिए, कार के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए बजट है, पर नहीं होता इसलिए चुकता। हर चीज़ की इंश्योरेंस है, गाड़ी आपकी सड़क पे नहीं आती जब तक इंश्योर ना हो। बंदे सारे अनइंश्योर्ड घूम रहे हैं तकरीबन। तो दैट इज लैक ऑफ प्लानिंग। बट लेट मी टेल यू कि वर्ल्ड में जितनी चीपेस्ट ये सर्विसेज हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं। बिकॉज एट दिस स्टेज ऑफ कैरियर एट 65 आई वाज वन डे डिस्कसिंग विद मिस्टर भाटिया कि शुड आई रिटायर और नॉट, एंड द कंक्लूजन वाज डू नॉट रिटायर बिकॉज जो इतने साल में स्किल आपने इकट्ठी करी है उसको दिस इज टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। इस स्टेज पे वी आर नॉट वर्किंग फॉर लाइवलीहुड। सारे लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स जो है वो अचीव हो चुके हैं, बच्चे अच्छे सेटल हो चुके हैं, बट स्टिल वी आर वर्किंग बिकॉज एक तो है कि कोड़ा नोड़ा में बढ़िए, दूसरा ये है कि जो दे सकते सोसाइटी को इस टाइम के बाद। थैंक यू। जिंदगी रहेगी तो बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी लंबी जिंदगी के नाम। राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, पार्वती देवी जी, एज 65 years. She was done angiography and 90% yes blockage. तालियां बजाओ, बिना बड़े बता दिया है पर blockage ही है। Only medicine given, she is all right, but medicine side effect reaction. तो इनका सवाल ये है कि मेरी आर्टरी में 90% ब्लॉक पाया गया था लेकिन हमने स्टेंट नहीं डाला। रीज़न जानने की कोई हम 70% की बात करते हैं, maybe that's the reason.
तो विच आई कुड इन्फर ਤੁਸੀਂ अगर कोई साइड ब्रांच है या छोटी आर्टरी है या जहाँ पे 90% बंद है उसमें आगे और पूरे एरिया को वो आर्टरी सप्लाई कर रही है, अगेन उस आर्टरी को स्टेंट डालने का तो बहुत ज़्यादा एडिशनल एडवांटेज नहीं होता विज़ मेडिकल मैनेजमेंट। ऐसी आर्टरी को भी डिस्पाइट परसेंटेज ऑफ 90 मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। Thank you so much. All right, let's keep this as the last question, right? Because we have so many other things. Okay, if one feels stress on chest while walking fast and going upstairs, climbing stairs, TMT and echo and ECG is all okay. इनका क्वेश्चन आई थिंक ये है कि अगर TMT, echo और ECG सब टेस्ट ओके हैं, अगर फिर भी स्ट्रेस फील होता है चलते हुए या स्टेयर्स, तो इज इट ओके? ये इस सिम्टम को हम एंजाइना कहते हैं। जब एक्सर्शन पे, वॉकिंग पे आपको चेस्ट में हैवीनेस या स्ट्रेस होता है, ये हमेशा कार्डियक सिम्टम होता है, जो कि वेल्व के कारण भी हो सकता है या आर्टरीज के ब्लॉकेज के कारण भी हो सकता है। 4 सिम्टम्स आते हैं वेल्व या आर्टरी के ब्लॉकेज से। एक्सर्शन पे सांस फूलना, एक्सर्शन पे छाती में भारीपन होना, पेन होना, जॉ में पेन होना, बैक में पेन होना या फीलिंग ऑफ कंस्ट्रिक्शन होना, जैसे कि रस्सी बांध दी गई है चेस्ट में। चलने में आपको चक्कर आना, क्योंकि एक्सर्शन पे आपके ब्रेन को हार्ट होना सप्लाई नहीं दे पा रहा, ब्लॉकेज के कारण, वेल्व के ब्लॉकेज के कारण या आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण, या चलने में सडनली पैल्पिटेशन होना। इस चारों के चारों सिम्टम्स जो है ये हार्ट के सिम्टम्स हैं। और ECG का ठीक होना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग इस चीज़ से मिसलीड हो जाते हैं, देखते ECG नॉर्मल आ गई, they ignore it and someday they suffer heart attack. Similarly, echo में हार्ट का कब पता चलता है? जब हार्ट में डैमेज हो जाता है। पर्पस उसका ये होता है कि वेल्व्स का पता चले echo में और डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली TMT, अगर एक मेजर आर्टरी बंद है तो TMT सिर्फ 45 to 50% में पॉजिटिव होगी, बाकी वो मिस होगी। हर पेशेंट में एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं आप, और जब क्लासिकल सिम्टम्स हैं, इवन ये नॉर्मल भी हो, इको, TMT, ECG, स्टिल फर्दर इवेल्युएट कराना चाहिए कि ये जो बेसिक टेस्ट है ये कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं। ये बड़े क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो कि डायरेक्ट रिलेट करते हैं हार्ट अटैक। Thank you very much. I think that completes the round for questions. और भी लेना चाहेंगे पर टाइम को मद्देनजर रखते हुए, तो कुछ पेशेंट्स हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, और सभी से यहाँ पे, सो उसकी तरफ बढ़ते हैं। उनका नाम है मान सिंह चौहान जी, प्लीज आगे आ जाए। मान सिंह चौहान जी। पार करना हर कठिन मंजिल कोई मुश्किल नहीं, पार करना हर कठिन मंजिल कोई मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। आज के इस समारोह के हमारे सर्वे सर्वा डॉक्टर राकेश कुमार जासवाल जी, इनके साथ बैठे हैं इनके अर्धांगिनी तथा इनके कोई रिलेटिव, फोर्टिस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और जो भी हैं, विशेषकर हमारे जो परिचित हैं जैसे राधिका मैम जी हैं, कुछ और भी सभी, इनका बड़ा सा स्टाफ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ही सारे जो मित्रगण हमारे आए हैं, पेशेंट ग्रुप में, जो भी एक पेशेंट ग्रुप में हैं, तो उनका सभी इस पंगाल में स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सौभाग्य मिला है थोड़ा बात करने का। मैं भी फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ। मुझे 2013 में एक अटैक पड़ा, और वो इतना ज़्यादा अटैक पड़ा कि मुझे गंभीर अवस्था में यहाँ लाया गया।
मेरी हालत बहुत दयनीय थी और मैं बेहोश की हालत में था। मुझे यहाँ लाया गया तो मुझे तो कोई पता नहीं था, पर हमारे कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि फोर्टिस हॉस्पिटल में हो जाओ, वहाँ इनका उपचार हो सकता है। और सौभाग्यवश यहाँ आए, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, पता चला कि एक बार तो ये भी मुकर गए थे कि इनको दिल्ली ले जाओ, लेकिन समय कम था। इन्होंने फिर साथ में वो बोला कि समय कम है, पहुँचा नहीं पाएंगे, और इनसे रिक्वेस्ट की गई। इन्होंने हमारी दशा को देखते हुए इन्होंने हमारा स्वीकार किया और मुझे एडमिट किया। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं दूसरे से आया, और वो समय भगवान दोबारा ना दे। उसके उपरांत उन्होंने ट्रीटमेंट जारी किया और उसमें स्टेंट डाला गया। मुझे 2013 में भी, 2014 में 2 स्टेंट डाले हैं, और तब से मैं बड़ा स्वस्थ हूँ। दवाइयाँ चल रही है, उपचार चला है लगातार। तो कहते हैं, हमारे कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन हमें तो साक्षात मिला है। हमें तो नया जीवन मिला है, हम उनके बड़े आभार प्रकट करते हैं। और इनका स्टाफ और इनका कार्यशैली बहुत अच्छी, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहन मिले। इनकी एक बहुत बड़ी इनकी व्यवस्था और इनका एक जो पेशेंट के प्रति इनका वो है व्यवहार है, बहुत सराहनीय है। इसके साथ साथ इनका जो स्टाफ है वो इतना स्थानीय है कि इतना कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वैसे भी बिजी होते हैं, उनको पता है कि हमेशा बिजी शेड्यूल रहता है इन लोगों का, लेकिन फिर भी इतना कोऑपरेट करते हैं। मैंने देखा, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस, 10 साल लोगों ने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट चला हुआ लगातार, लेकिन इनका इतना बढ़िया प्रोग्राम है और इतना बढ़िया स्टाफ है। भगवान करे इनकी और ज़्यादा तरक्की हो और हम लोग को और ज़्यादा राहत मिले। तो मैं अधिक ना बोलता हुआ, क्योंकि मैं एक बार फिर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इनकी तरफ से जो आप लोगों ने आयोजन करते हैं, हमारे ये बहुत बड़ा बोझ है कि सबसे अगर देखा जाए, लेकिन हम इस चीज़ के लिए होती है कि आउटिंग हो जाती है। हम भी इस बहाने कहाँ से आपके दूर दराज से पेशेंट्स आए हैं और सबको बड़ी राहत मिली है। तो मैं यही कहता हूँ, भगवान आपकी और तरक्की करे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को नमन। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक अपनी स्टोरी आके शेयर करने के लिए भी करेज चाहिए, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ओके, डॉक्टर राजेश कुलिया जी हमारे साथ हैं, जिनका हमने नाम कुछ देर पहले भी सुना, तो प्लीज स्टेज पर आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर राजेश कुलिया, थैंक यू। आप सभी को प्रणाम। डॉक्टर जसवाल को मैं और मेरे परिवार की तरफ से मैं माई हॉस्पिटल से 10 सर्जरी करके वापस आया था। रात को नॉर्मल खाना खाया, अच्छी नींद आई। सुबह अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट। आई वाज जस्ट माय वाइफ विकी एंड माय सन to the nearest hospital, जहाँ पर CPR के नाकामयाब होने के बाद इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए 1, 2, 3। डॉक्टर्स ने बोला भी 3 के बाद हम देते नहीं। माय ब्रदर डॉक्टर डॉक्टर साहब चौथा और दे दीजिए, चौथा दिया। फिर उन्होंने बोला अब क्या करें, ब्रदर लॉ ने बोला मतलब बंदा तो गया, एक और दे दीजिए। 5वीं के बाद एक दिया and I sprang back to life. I was rushed to Dr. Jaswal's care, and I must thank him for being so prompt in action, because of which I am standing here in front of you all. Listening to his story, I also remember our family being the farming background. My father, दादाजी टोल्ड ये खेती बाड़ी खूब कर ली, फौज में भर्ती हो जाओ। तो रिक्रूटमेंट हो गई थी, लाइन में भर्ती हो गए, करते करते थे, सिलेक्ट हो गए। वहाँ से यंग ऑफिसर कोर्स, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर से उन्होंने रिटायरमेंट लिया।
उनको देखकर दूसरे चाचा जी, तीसरे चाचा जी, तब पिताजी ने बोला भाई फौजी बहुत हो गए, डॉक्टर कोई नहीं है फैमिली में। मैंने कहा पहुँच जाऊँगा डॉक्टर, पर ढूंढूंगा इंडिया का वर्ल्ड का बेस्ट मेडिकल कॉलेज, 1986 बैच, टोटल 50 सीट्स, 34 ओपन कैटेगरी, 5 फॉरेन नेशनल्स, MBBS, MS जनरल सर्जरी, मुझे करनी थी यूरोलॉजी। मैं करूँगा तो बेस्ट टीचर्स, लेट प्रोफेसर अतंगड़ी सशाद्री पर, the father of urology, that was in Sri Satyasai Institute of Biomedical Sciences, Puttaparthi near Bangalore, totally free for the patients, latest technology. After learning urology under his guidance and mentorship, he told me to write a book in urology. Sir, aap hi bata dijiye, he said, India has got the maximum number of road traffic accidents in the world. So write a multi-authored book on address of angioplasty. After finishing my training in urology from there, on my farewell, he told me one thing: always place yourself in the patient's shoes and then pick up your pen. You will never go wrong. And this Guru Mantra I always follow. Coming back from there, I wanted to practice in the best city of India, that was Chandigarh. Again, I wanted to practice in the best hospital of Chandigarh, that was FORTIS. 2 years in FORTIS. The management told me the patient's bill is not up to their expectations. I left FORTIS. I built my own hospital by the name of Mayo Hospital. So named because I was invited to a lecture in Mayo Clinic. I thought that is a clinic, I will keep it hospital. They will not mind, they objected. I changed the name to My Hospital. Everybody appreciated it because they felt a connection of my hospital. So, this is my journey as a urologist in North India. I always place myself in the patient's shoes and then pick up my pen. It never goes wrong. Why? Because I am not treating you, I am treating myself. And I will get, if I get well, my patients will get well. And this is what I believe Dr. JASWAL also does. Pranam, Dr. JASWAL. Lakh, lakh pranam. Thank you very much, sir. अभी इनके बाद सुरक्षा रानी जी, आप प्लीज आगे आए। सुरक्षा रानी जी, प्लीज आगे आए। सुरक्षा रानी जी, प्लीज आगे आए। He must be around. Okay. Mr. नागराज जी है हमारे साथ, प्लीज स्टेज पर आए। Mr. नागराज है हमारे साथ, प्लीज स्टेज पर आए। Mr. नागराज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, तो आप सभी से बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट कि हम थोड़ा सा ब्रीफ करें ताकि सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएं, किसी का रहना चाहे। My name is Captain Nagar. I've been a fighter pilot in the Indian Air Force for more than 20 years. Thereafter, I changed over to Jet Airways, so also as a commercial pilot. Well, I always had healthy diet. I always was regular in my exercise. But was there stress in my life? Yes. It was job-related stress. It was plenty. I remember so clearly, I operated 4 flights at night and I wasn't feeling too well. I know you guys must be thinking, thank God we were not on a flight. So, when I landed at Delhi at night, at 2 o'clock in the morning, and I thought I need to see the doctor. I have immense faith in Dr. JASWAL. I could have easily gone to his spots or any other hospital in Delhi. But I drove down at night to Chandigarh and I went to him the next morning.
stent was not enough. He had to put 2 of them in a row. Thanks, doctor, you did an excellent job. I'm standing here today. Okay. And I also would like to request you, please don't retire. You know, you're planning to retire, don't look at it. So, I had to give up my job, alright, because of my condition. And we settled here in Chandigarh, living a very good life. Doctor has not been my treating doctor alone. In fact, he's been a treating doctor for the entire family. My mother-in-law, she's 92 years old. She's been cardioverted twice. My wife keeps bothering him at times, you know, because she needs better treats and medicines, days and things like that. And, but she's still with us. She still has a hand with us. I'm very grateful to you for that. And thank you so much for this patient awareness program. We learned a lot. And it was an excellent talk. We thoroughly enjoyed it. And we wish you Godspeed, good luck, the very best of health. And remember, don't retire. Okay? You have to take care of us. Thank you very much. Thank you so much. Very sweet. All right, गुरदयाल जी के पास चाहूँगी प्लीज माइक लेके जाएं. Thank you. Greetings of the day, everyone. I am speaking before you today to express my heartfelt gratitude to Dr. JASWAL and his entire medical team. He has given me rebirth, there is no doubt. I have been able to reclaim my life. Thank you, Doctor. You are wonderful, you are fabulous, you are marvelous, you are majestic. Now coming to TAVI, I have recently underwent TAVI, and my expression about TAVI are as follows. The day of TAVI was nerve-wracking for me. I was so depressed and questioning myself why I opted for this procedure. Then I was shifted to the recovery room, and my daughter and wife came to see me. My daughter told me that Dr. JASWAL has said the operation is highly successful, and it is successful because the God was with us, because the hand of God was on our head. I was so impressed. These words had magical effect on my thinking. All my nervousness, all my other negative thoughts, just very simple thing. This reminded me also the holy words of Saint Kabir, who says, he didn't, Dr. JASWAL did not take the credit, but gave credit to God for this. Wonderful. This reminded me also few words of Saint Kabir which run as follows. ना कुछ किया ना कर सका न करने जो सही, जो कुछ किया सो सहज किया, भयो कबीर कबीर. मीनिंग साहब का मतलब यहाँ परमात्मा है. भयो कबीर कबीर का मतलब है, भयो कबीर का मतलब है यहाँ के कबीर के नारे लग रहे हैं, जय जयकार हो रही है. But Kabir never took credit for himself. He attributed, he told his numerous followers of many chronic diseases of mind and body, but never took credit. He gave credit to God. He attributed all credit to God. After TAVI, before TAVI entered my body, I was feeling like a dead person, half dead person. My life was like a black and white movie, done, listless. But after TAVI, I am sure my life will be again full of colors. Again it will be multicolor or gigacolor. After TAVI now I will be able to do all my regular activities without any fear. So, million of thanks to Dr. JASWAL and his entire medical team and nurses and technicians and the housekeeping staff. I am proud of you. Thank you so much, and we are proud of you, Gurdayal ji. We are so proud of you. Thank you so much.
सुरक्षा रानी की तरफ से उनके बेटे अशोक जी हमारे साथ हैं, तो प्लीज वो आ गए हैं स्टेज पर। मैं अशोक कुमार पन्ना से आया हूँ। डॉक्टर साहब के साथ तो मेरे परिवार संबंध भी हैं। मेरा 1911 में मुझे हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर साहब मुझे पूछना चाहते थे 11 से लेकर 24 तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चला हुआ है। मेरे फादर साहब को आज से 26 साल पहले अटैक आया, डॉक्टर साहब ने देखा था। आज भी वो 90 साल की उम्र हो गई है, बिल्कुल ठीक ठाक है। रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर साहब को चाची जी 2 हफ्ते पहले अटैक हुआ, बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका, आप पूना से आए हैं स्पेशल, और बहुत सारे लोग दूर से भी आए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। ओके, मिस्टर ओपी शर्मा जी प्लीज स्टेज पर हमारे साथ जुड़े। हमें बहुत खुशी आप अपना सब टाइम निकाल के आए हैं, हम सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। डॉक्टर सवाल के बारे में सभी जानते हैं, वैसे भी जानता है कि जो एक राउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं इनके एक और पहलू को टच करना चाहूँगा, इनके बचपन का, इनके स्कूलिंग करियर का मैं वो पहलू टच करना चाहता हूँ। जिस स्कूल के ये प्रोडक्ट हैं वही स्कूल से मैं पढ़ा, मैं इनसे सीनियर था। तो जब हम वहाँ से आगे रूरल बैकग्राउंड है, तो जब हम यहाँ मैं चंडीगढ़ में वहाँ स्टडी कर रहा था, तो 75 की जो जून जब आई, जो रिजल्ट निकला, तो हमें इतना प्लेजेंट सरप्राइज हुआ। हम 3 दोस्त थे जो उसी स्कूल से आए थे और यहाँ न्यूज़ में पढ़े जॉन स्टूडेंट। तो जून में जब मेरिट लिस्ट आई, तो टॉप पे जब हमने देखा कि जो उस साल के जो टॉपर थे वो डॉक्टर जसवाल थे। तो हिमाचल स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो टॉपर थे, हमने कहा हमें इतनी खुशी हुई, ऐसे हमें लगा कि जैसे हमने सभी ने टॉप कर लिया है उस स्कूल के। तो हम भी वहाँ तो वही एलुमनाई थे, तो हमने कहा कि चलो देखें। हमने फिर क्योंकि स्कूल घर से पैसे तो वो रेगुलर से आते हैं, हमने सभी ने पैसे पूल किए और हमने सभी दोस्तों को ट्रीट दी। हमने कहा हमें इतनी खुशी हुई कि जब लगता है कि ऐसे ना हमारे में से हमने ही टॉप कर लिया हो। लेकिन बाद में देखो मेरे हम ऑटो टच हो गए, लेकिन इनकी अचीवमेंट देख के इतनी खुशी होती है, इतनी प्राउड फील होती है कि अपने इसी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो इस लेवल पे पहुँचे हुए हैं। तो हमें आज भी बड़ा गर्व महसूस होता है और लगता है कि हमारे जो नाम रोशन कर रहे हैं स्कूल का, हमारे एरिया का, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और मैं आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू डॉक्टर सवाल कि इनकी लंबी परमात्मा इनकी लंबी उम्र करे और इनके हाथों में वही शफा काम रहे कि जो लोगों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और लोगों की ज़िंदगी और सुखमय बनाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर उन दुआओं के लिए जो सबके काम आएंगी। ओके, हमारे साथ हैं मिस्टर PS बिंदर जी, प्लीज स्टेज पर आए। थैंक यू। Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my privilege actually to speak. Was probably the last person here? Okay, because I think it's lunchtime or something. So I won't take much time. Everybody has talked so nicely, so I don't want to repeat anything. But a little background of myself, if it's okay, I can speak in English. More familiar with this time. Okay? Sorry about that. So, my name is Krishna Pitra, and I have known Dr. Jaswal for, I don't know, it's a
few decades now. So he mentioned quite a few things in his presentation which I could associate myself in that. I think I'm still a type A personality, where my job required me to run even in sleep. Because in a highly competitive world, if you walk, you're left behind. I was the president of the vaccine, and I was managing the entire world, 29 locations in 15 countries. I never got sleep. So I was a type A person. So eventually, I am fit, I don't wake up, I hardly eat meat, I walk every day. So all those things I was taking, yet I got hospitalized not once, not twice, but 3, 4 times. And 7 days, 10 days because of hypertension. Doctors put me on everything, most of you might be knowing in hypertension by ABC classes of drug. And all the drugs he put me on, and still it will not come. And then his real factor, which I always believe that his quality is empathy. He would listen to me and he told me, "Dasar pusi hai, stress kyun karna hai? Main dawaiyan sariyan leti hu, but unless and until you stop this stress, you will not. I will not be able to do it. I can keep you in hospital as long as you want. But this was just empty. Today we are such good friends. I know about his family, I know about what Pranav, his son, is doing, where is he? He knows about me. He listens. And by the virtue of my work, I know a little bit about pharmacy and things like that. So he listens. If I tell him, "No, I don't agree with you," he explains to me why it has to be. So a doctor is as good as his empathy. And I find him as a, I was in Spain, and I suddenly got, I couldn't see anything, and I rushed. Those days we didn't have, cell phones. We had cell phones, but sort of things. So I took the next flight, my wife and I, we came back to India, rushed to the hospital, and he believed me. He just took, I think it was middle of the night or something, when I landed here in Chandigarh. He rushed to the hospital, and he took care. I think it was actually a mini stroke or something, but he took care. So that and his empathy made a lot of change. The last thing which I want to tell you about is that my father he was about 99 years old at that time, had fallen down and he had broken his head. So he was, the doctors in FORTIS said, a high risk, we may not take it to Dr. JASWAL. So I went to him. So he said, "Sir, you have no choice. He is 99. Until you operate, he may survive, he may not survive. But if you don't do it, he will be miserable, you will be miserable." So I said, "Okay, I'll take your advice and I will get it done." The operation went very successful. Unfortunately, immediately after surgery, he had some sort of cardiac problem. And Dr. JASWAL was called immediately. I see when he was brought out of the surgery. He had a flight to take, I think it was in the head of Chennai after. He did not move. I mean, the doctors actually gave up. But he did not move. I was standing there next to him because they were trying to revive him. But he did not go. He postponed his flight to Chennai till he could actually make him not conscious, but he became stable. So that's his dedication, his empathy, his dedication, and listening power. I go to him for 5 minutes, but we discuss 15 minutes. I don't have too many friends. I'm being very honest because my job required me. It's very lonely in the job. But I can open up with him. I can share with him, and he shares with me. When Pranav was a young boy, how he did his MBA with different. So we share. So that
the relationship between a doctor and a patient has become more of a friendly because of this empathy which he showed. Most of the doctors don't have time to do. So thank you very much. We're very grateful for your presence and for enlightening empathy. Most of all, thank you so much. Kamlesh Chaudhary ji, you're requested to please stage that. मैं कमलेश चौधरी जिला कुरुक्षेत्र गाँव बगल से आई हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं इनकी पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति 2 बार FORTIS में एडमिट रहे, 2 बार ऑपरेशन हुए और बहुत ही क्रिटिकल, मैं कहती हूँ जैसे मौत के मुंह से कोई जिंदा बचा कर ले आए, इस तरह का इलाज मुझे था। और जब पहली बार मैं आई थी यहाँ लेकर तो तब किसानों के साथ धरने के कारण जो रास्ता 1.5 घंटे का था वो 3 घंटे में तय हुआ। रास्ते पसीने छूट रहे थे, बिल्कुल मैं होपलेस हो गई थी कि FORTIS कैसे आएगा। ड्राइवर जो था वो SOS की गोलियां से मुंह में डालता रहा, आधा घंटे बाद फिर SOS की गोली मुंह में, आधा घंटे बाद फिर गोली, और इस तरह से जैसे तैसे करके FORTIS मंजिल हासिल कर ली। और जाते ही पता नहीं क्या जादू किया कि वो जलन, वो दर्द, वो चीख, वो पीड़ा बिना दवाई के खत्म हो गई। ऐसा चमत्कार मैंने भारतीय में देखा। और आज मैं डॉक्टर साहब का एक और रूप सामने देख रही हूँ। इनका बोलने का तरीका कमाल है। डॉक्टर तो का पेशा ऐसा है कि वो इस तरह का सामाजिक गैदरिंग है, वहाँ थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का जो अंदाज है बोलने का, अपने पेशेंट को समझाने का कि कैसे रहना है, स्ट्रेस कैसे कम करना है, लाइफ कैसे जीनी है, अच्छा जीवन कैसे जी, यानी एक प्रीचर की तरह है कि शांत रहिए, इच्छा त्यागिए, क्रोध कमाल डॉक्टर सरल सलूट करती हूँ आपको मैं इस तरह की संत होता है, संत बाबा को बैठ कर समझाता है कि संसार के प्रभुओं को छोड़ दो, लाल से दूर रहो, लोभ से दूर रहो, दिमाग फालतू लोगों इस तरह की चीजें डॉक्टर के मुझे सुन करके बताओ आज चलते रहती। और इलाज तो, और एक बात और जरूर कहना चाहूँगी, इनकी जो एक असिस्टेंट है राधिका, यानी देखिए एक अंदर एक असिस्टेंट बैठी है, उसके सामने धक्का है पेशेंट का, पेशेंट को नहीं पता कि मेरी बारी कदा होगी, मेरी बारी देखा दो ना जी, डॉक्टर साहब कदा होगी। इस तरह के सवाल बार बार इस तरह से जैसे कोई मतलब बहुत ज्यादा भीड़, और किसको समझाए, किसको क्या कहे, बारी आने पर तो दिखाया जाएगा, लेकिन पेशेंट को बेचैनी रहती है कि ना जी हम 2 घंटे हो गए बैठे, 3 घंटे देखा तो जी बस मर लिए जी हम तो। इस तरह के जो वातावरण में एक लड़की है वो इतनी शांत है, स्माइलिंग फेस है, वो बिल्कुल नहीं चिढ़ती। अगर कोई कम पेशेंस वाला बंदा हो तो उस लड़ाई को अच्छा वहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि मैं 60 में एक बार नहीं मैं वहाँ और मेरे स्टूडेंट रहे, और 7 दिन दूसरी बार, यानी 14 दिन में मैं सच बताती हूँ ये हॉस्पिटल को लेकर के दिमाग में डर बना रहता है, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं हमें किस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इलाज होगा या नहीं होगा, हम किस तरह से हमारा पेशेंट ठीक हो। लेकिन पता नहीं वहाँ पर इतना अच्छा लगा मुझे कि सच बताऊँ 7-8 तरह निकल गए मुझे। और एक बात और, मैं तो पेशेंट अटेंडेंट थी तो मेरी लाइफ तो सोचते रह गई थी, मेरा एक्सपीरियंस को सोचते रहता था, क्योंकि पेशेंट में अनेक होते हैं। तू कहाँ से आए थे? हिमाचल से, तू कहाँ से आए थे? कश्मीर से, आप कहाँ से आए थे? हरियाणा से, आप कहाँ से लोकल। इस तरह से मैं रोज देखती थी कि आज एक व्हीलचेयर गई, पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद 2 घंटे बाद एक व्हीलचेयर हो रहा है, पेशेंट ठीक हो गया, तीसरी व्हीलचेयर आई, पेशेंट ठीक हो गया। यानी रोज की रोज कम से कम 10-15 पेशेंट को मैं ठीक हो जाते देखती थी, और बड़े खुश रहती थी सबके साथ, और बात करती थी कि आपके कुछ आप इसके साथ आए हैं जी, हस्बैंड के साथ, आप इसके साथ जी बदल को लेकर आया हूँ। मैं चुप तो रहती नहीं, इससे पूछ उससे पूछ उससे पूछ, और सारा ही जितना माहौल वहाँ खुशनुमा रहता था, लगता ही नहीं था कि हॉस्पिटल में आया। और एक बात और कहूँगी, अटेंडेंट के लिए इतनी सुविधा नहीं होती कि रात को 6 बजे ना वहाँ कुर्सियाँ हटा करके खिदारी का पोछा लग जाता था कि यहाँ सो जाओ। बिल्कुल परेशानी नहीं थी किसी बात की, लेकिन बाथरूम साफ सुथरे, सिक्योरिटी पूरी 100% मजबूत, कोई दिक्कत नहीं, आप सोइए आराम से, आपका मोबाइल रखा है, आपका पैसा रखा है, कुछ भी नहीं है, कोई खतरा नहीं आपको। ऐसा बढ़िया मुझे वहाँ लगा कि हॉस्पिटल से लोग डरते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ठीक हो जाता है, ऐसी जगह पहुँच जाते हैं तो डर वाली कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और एक बार मैं
और सवेरे 5 बजे उठ जाओ जी ऐसे हंगामा कर देते थे। यानी पेशेंट अटेंडेंट के लिए जीरो सुविधा है वहाँ पर। और भी बहुत कुछ था लेकिन बता नहीं पाऊंगी। और कहते हैं कि लड़ाई बच गई जोर से उनके साथ, वो बोले क्या करेगी, मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सवेरे डीसी के पास Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Brigadier Satish from MOHALI. I am 79-year-old. Unfortunately, I suffered from heart problem in 83. सबको खुश करने के लिए थैंक यू। ब्रिगेडियर सतीश जी हमारे साथ हैं, तो प्लीज वो भी स्टेज पर आएं।
contact with General JASWAL this year. It was a new word for me. He was so approachable and he made me so comfortable, and I was so happy to be as a patient of Dr. JASWAL. Under his care, I have been able to play my golf. I am a good golfer. Till date, I am maintaining a single handicap. It was a treat listening to golden words what he spoke today. It was very educative what he has spoken, and we are grateful to him for giving us all the advice and how should we continue with the very, very healthy life. We wish him all the best, and I pray for him that he continues with the great life which he is leading. Thank you so much. Thank you very much, sir. Indrajit Walia ji हमारे बीच में हैं, please stage पर आएं. जिदा सर ने क्या अपनी ऑनेस्टी की गल की सर एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट मैं दस कहना चाहना साढ़े लोगों ने धारणा है कि जी प्रॉब्लम हो गई फोर्टिस खाना नहीं फोर्टिस नहीं जाना उसे देखते दो बार लोगे उसे पैसे ज़्यादा ले लोगे. आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. मैं अपने कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दिखाया कम से कम 3 बंदियां को दिखाया सिर्फ 2 बंदियां के स्टंट पे बाकी डॉक्टर साहब ने दवाई ने ठीक कर मेरा रियल कजन 120 किलो के ओवर का वेट सी और पेन हुई चेस्ट नाम खाना डॉक्टर साहब को लेके आए और एंजियोग्राफी हुई सर ने मैंने क्या तुम आके देख लेना जो एंजियोग्राफी के बाद देखते भी है. उस तो पहले मेरा कजन मैंने कहता ये मेरिया एफडी हैं ये मेरे बैंक अकाउंट इतने है एफडी मेरे इतने पे हैं तुम मेरे बच्चा का सी हो ये मेरा प्लॉट है वो रजिस्ट्रेशन है मैं तो डरना और एंजियोग्राफी हुई डॉक्टर साहब ने दिखाया कहते बिल्कुल क्लियर आर्टरीज है. देखो ऑनेस्टली का सर ने गल की सब कुछ है कर कौन कहते बिल्कुल क्लियर आर्टरीज है मतलब ये नहीं तो हर समोसे खाने और इतना खुश होया डॉक्टर साहब की गल सुन के पहले पीछे जाना चाहता सीगा बट वो मैनू उस चीज़ का बड़ा सानू आप फकर होंगे खुशी होती है कि साढ़े कोल अच्छी जगह पर मैडिकल फैसिलिटी हैगी है और इन्ने अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं. लास्ट में यही कहूँगा जिस तरह टीचर डायलॉग है तुम हो तो सब हैं तुम हो तो हम. Thank you very much, sir. We have Brigadier Chauhan ji on our side, so please join us on the stage. Brigadier Chauhan. Ladies and gentlemen, Dr. Rakesh, जब मैं सुबह यहाँ पर आया तकरीबन 10 बजे तो डॉक्टर राकेश ने बोला कि आपको डॉक्टर साहब का कुछ बोलना है. तो मुझे हंसी आई तो मैंने कहा कि मैं उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ. इतने शिक्षक हैं अपने आप में तो मुकाम है आपका बड़ा मैंने आपको बोला जो बोलना चाहते हैं. तो डॉक्टर साहब मेरे पारिवारिक जो है संबंधी हैं साहब डॉक्टर पहले मैं नहीं जानता था. मेरा पहली बार 1998 जनवरी में जो है पहली बार मेरे को टैकीकार्डिया हुई. हार्ट की स्पीड तकरीबन 100 हुई तो मैं यहाँ से पहुँचता तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हॉल में तो कोई बड़ा सेशन नहीं है तो वहाँ के किसी डॉक्टर ने मेरे को हैंडल किया रात को. तो उसके बाद रिवाइज हुआ चलो हम चलते हैं अभी और जब पता करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है. मैं पटियाले में आया. पटियाले में कुछ पता नहीं चला नहीं हो गया कि आपको किराए जो जाने आप छठे महीने से हैं कोई खास बात नहीं हो गया. मैं यहाँ पर आया डॉक्टर साहब सब जो है MCD के लिए था तो मैं उनसे मिला तो बात नहीं आपको कुछ नहीं है तो ठीक है होगा कुछ बड़ी बात नहीं होता. मुझे लोग जब देखो कोई ठीक है मैं चेक करता तो ईको किया. ईको बोले हाँ आपकी प्रॉब्लम है और आपको जो है RHD है न्यूमेटिक हार्ट डिजीज. मैंने ये कैसे होती है बोले बचपन कभी हुई होगी. तब से डॉक्टर साहब मेरे को जो है 36 साल हो गए हैं और मैं उनके सेंटर में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ. और लेटेस्ट जो है वो 4 अप्रैल को जो है मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं डॉक्टर को कॉल किया थोड़ा ऐसा हो रहा है तो मैं मंडे को आता हूँ. ये फ्राइडे की बात उन्होंने मंडे नहीं कल सुबह मैं देखता हूँ तो उन्होंने जो है देखा
लगभग विदिन 24 आवर्स अगर हो। तो डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात कही, इसका देखो बताता हूँ। आप मेरे फ्रेंड हैं, पोस्टमेट हैं, उनको प्रॉब्लम हुई, मेरे को कॉल कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, बात करता हूँ। डॉक्टर ने कॉल किया, मुझे डॉक्टर बाहर गए थे। तो देखिए इनकी जो अच्छाई है, जो इनका जो है कि ब्रोकन है, सुबह 5 बजे कॉल किया, मैं वहाँ पर तकरीबन 3 बजे होंगे, तो फिर कॉल आया मेरे को कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अभी बाहर हूँ, तो आप लोग प्रॉब्लम बताओ मेरे को। मैंने मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात ठीक है, मेरे स्टाफ हैंड करके मैं आ रहा हूँ मंडे को। तो मंडे वापस कर इन्होंने उसका एंजियोग्राफी करी और एंजियोप्लास्टी करी। तो डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने प्रोफेशन में ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी दोनों चीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। डॉक्टर साहब पता नहीं बताऊँ मैं आपको, डॉक्टर इतना हल्का बोलते हैं, इतने मतलब इतना काम करने के बाद भी हर एक तरह से बात करने कहते पहली बार वो वही एक उनका पेशेंट है। तो डॉक्टर बताता हूँ आपको कि डॉक्टर मैं ऑफिस जब जाता हूँ क्लिनिक में, तो मुझे एक बड़ा घबराहट रहती है, तो धीरे बोलते हैं और इतना ध्यान से बोलते हैं, ध्यान रखना पड़ता है बोल क्या रहे हैं। मेरी वाइफ देखते हैं बोलती मैं कहूँगा आपको क्या बोल रही है, आप ध्यान रखो। तो डॉक्टर साहब मैंने बहुत सेमिनार अटेंड करे हैं, जो मैं सुबह यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि आपके जो तार हैं सबके दिलों से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी यहाँ पर कोई भी व्हाट्सएप खोल करके या मोबाइल खोल करके लोग ले रहते हैं, आप इसमें सुनते रहते हैं। कोई भी यहाँ पर मैं मोबाइल खोल के बैठा हुआ सब आपको देख रहे थे। और मैं मैडम से गुजारिश करूँगा किसी तरह से कि डॉक्टर की लड्डू वगैरह जो डायमंड की बातें कर डायमंड जो नहीं है, आपको सबके दिल जो है ना वो संभाल के रखने हैं। आप हैं सबके दिल जा रहे हैं, तो आप इनको दिल लगाए रखिए, ये बाकी को दिल लगाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। पूरा जो है आपका जो पेशेंट की देखभाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सर ने थोड़ा सा डरा दिया सबको रिटायरमेंट का नाम लेके, कि नहीं? ऑलराइट, बट ये अच्छा लग रहा है सुन के कि टॉक सबने बहुत ध्यान से सुना है और पता ही लग रहा है। ओके, वी हैव हमारे बीच में मिस्टर सुरेंद्र दीवान जी, वो प्लीज आ गए हैं। आई थिंक आप होशियारपुर से हैं। ओके, डॉक्टर साहब खुद दिल का इलाज करते हैं और लोगों के दिलों के इलाज करते हैं। बहुत ऑपरेशन किए, मैं शोध सर्विस करता मैं स्टेट बैंक की मैनेजर था, बात करने को एक्सपीरियंस 2.5 साल। मेरा शौक है पेशेंट लेके आना, लोगों जो खासकर हार्ट के पेशेंट है उन्होंने लेके आना और उन्होंने इलाज उन्होंने हेल्प करनी या इदा के काम करना। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी कोई भी डॉक्टर है। डॉक्टर साहब आप मैंने अपना बड़ा बना के दिया, 2 बार मैं खुद भी डॉक्टर साहब ने मैंने ऑपरेट किया, बहुत खुश है। डॉक्टर साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना, बहुत बंदे ने कहा उन्हें कुछ दोबारा कह दी भी मेरी इन्नी जरूरत नहीं है कि मैं उन्होंने सुपरसीड करा। डॉक्टर साहब जितने सोने हैं उन्ने सोने डॉक्टर है। परमात्मा करे इदा ही रहन, इदा ही भाभी जी बैठे दौरान साढ़े में हेल्थ मिनिस्टर भी बैठे आ हुशियारपुर से रहे उन्होंने भी डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया, वो खुद भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। तो मैं एक गल कहूँगा, जी तो बहुत कुछ कहता है लेकिन क्या कह दूँ तुझे, कुछ खुदा का खौफ है वरना खुदा कह दूँ तुझे बस जय। हमारे बीच में खास रिलेटिव है सर के, एक ही क्वेश्चन चाहिए, अगर उनको प्लीज हम स्टेज पे बुला सके और उनसे कुछ शब्द सुन सके प्लीज। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर राकेश जासवाल का मामा जी हूँ। डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन हर बात को यहाँ से बाहर जाने के बाद हम लोग कितना फॉलो करेंगे, तो मैं अपनी एक फैमिली का एक छोटा सा आपको इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब उस समय पीजीआई में थे और कोई आज से कोई 35-40 साल पहले की बात होगी। मेरी भाभी को हार्ट की प्रॉब्लम आई और उनको फोर्टिस में डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ा। उनका जो मैनेजमेंट था हो गया। 1-2 दिन के बाद हमारे घर में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके हार्ट के अंदर इतनी ज़्यादा चर्बी जमी हुई थी
कहते बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इनको मैनेज किया। डॉक्टर साहब की नानी जी, मेरी माता जी, वो भी पास में बैठी हुई थी। तो कहती ये चर्बी कितना जमा हो जाती है। डॉक्टर साहब कहते कि इतना है नानी जी, घी नो इस्तेमाल करने के 3 तरीके होंगे हैं। एक जब तुम रोटी बनाते हो तो घी का डब्बा चूल्हे के पास रख देते हो, तो रोटी के डब्बे से तुम पाते हो, जिन्ना घी आ गया वो रोटी के नाल खा लिया जाता है। कहते फिर इदा नहीं करना, कहते नहीं इदा नहीं करना। कहते फिर कितना करना, चम्मच के नाल घी पाना, कहते नहीं नहीं इदा नहीं करना। कहते फिर कितना करना, कहते इदा किया करो कि डब्बा घी का खोल दिया करो, गरम गरम रोटी उतार लिया करो, रोटी घी नो देख ले, घी रोटी नो देख ले, और वो रोटी खानी देख जाए। तो डॉक्टर साहब के नानी जी, मेरे माता जी बोले कहते इतना कितना चलेगा। लेकिन उस दिन के बाद से हमारे घर में वैसे ही चलना शुरू हो गया। मेरे दादके से घी दूध आया करता था, और दूध की क्वालिटी ये होती थी कि जितनी मोटी मलाई उतना अच्छा दूध। सब हमारे यहाँ बैठे लोग ये विश्वास करते होंगे कि धोती से लेते हैं और बहुत मोटी मलाई जमती है। उसको बंद कर दिया गया और जो सबसे कम फैट वाला दूध है उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गया। मेरे माता जी 94 ईयर्स की एज तक जिए, मेरे फादर 100 ईयर्स की एज तक जिए। जब कोई प्रॉब्लम होती थी छोटी मोटी, डॉक्टर साहब अटेंड करते थे। और हम लोगों के लिए आज ये बहुत गर्व का दिन है कि इतने लोगों ने हमारे परिवार के व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साडा मामा बड़ा ग्रेट। ऑलराइट, हमने जोश के साथ स्टार्ट किया था, जोश के साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेस्टिमोनी लेंगे हम मिसेस जोश का। तो समय को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, लेकिन दिस वन कुड बी द लास्ट। मिसेस जोश, हमारे साथ। ओके ओके, हम तो दूर दूर देख रहे थे आपको। डॉक्टर आरके जसवाल जी, मैडम जी, मैं अज थानू एक मुबारकबाद देना चाहती हूँ, तो उस मां को भी प्रणाम करना चाहती जिन्होंने डॉक्टर साहब को भेजा दिता। क्योंकि मां एक बहुत बढ़िया संस्कार, मां ने पैदा किया। आज उस मां को मैं प्रणाम करती हूँ, उन्होंने चरणों से नमस्कार करती हूँ। क्योंकि जो मां की बैक ना हो या बाप की बैक ना हो या अच्छी गाइडेंस ना मिले, तो फिर असी इन बुलंदियों पर नहीं जा सकते। मैं अपने एक तुहाडे सामने, मैं सारे जिन्हें भी साडे इत्थे पेशेंट मेरे वर्गे आए हो, मैं सारे को सब तो पहला सत श्री अकाल कहनी है, सारे नमस्कार करनी है। तो मैं भी डॉक्टर साहब की गिणी है बहुत, क्योंकि कई बार पता नहीं लगता कि असीं काम करी जाने तो ना साढ़े को समा होंदा, लेकिन ये नहीं पता लगता सिर्फ अंदर की है। मैं तो एक अचानक ही गल दसना चाहती हाँ कि मैंने जो बचाया तो डॉक्टर जसवाल ने बचाया, क्योंकि मैं सुती उठी हाँ, तो सुती उठ के मैं वैसे थोड़ा जहा बॉडी का भी ख्याल रखती हूँ ज़्यादा, कि मैंने इवें लगता है कि मैं मेरा दरवाजा खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो, मैंने हवा नहीं लग रही, तो मैंने ये पता ही नहीं सी कि फिर अंदर की है। मैं इमीडिएटली उस वे डॉक्टर नाल को गई, क्योंकि उस वे मौके पर उत्थे सी साडे हुशियारपुर उन्होंने को गई तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट की थी, वो कहते कि समथिंग इज रॉन्ग। तो मैं फटाफट ही डॉक्टर, क्योंकि मेरा इन्हों का नाम सुनिया सी तो इन्ना विश्वास से मैं सीधे डॉक्टर साहब को आ गई। मेरा बेटा भी मेरे नाल सी, इन्होंने को आ गई, इन्होंने कहा कि 95% ब्लॉकेज है।
95% बहुत होंगी है। तो असी मैं क्या जी करो जी छेती करो काम निबेड़ दिओ जी। इन्होंने भी रजिस्टर स्टैंड पाता तो मैं अज सारिया की सेवा में हाजिर है। तो मैं इन्हों बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि एक तो इन्हों की जोड़ा बोलन शैली है, एक इन्हों का समाइल जोड़ा देना अद्धा मरीज को ठीक कर दिता। मरीज अद्धा वैसे डॉक्टर के थोड़ी गल करने भी मरीज ठीक हो जाते हैं। ये गल सच्ची है ना, ये सच्ची है तो फिर दस दो भी सारे सच्ची है क्योंकि जे डॉक्टर ही होर तरह का होए तो फिर बंदा अद्धा ही रह जाता। इस करके इन्होंने डॉक्टर साहब की मतलब खासियत ये आ कि बहुत वधिया इंसान है। दूसरी गल मैं डॉक्टर साहब ये भी कहना चाहती हूँ, ये ऑडियंस भी सुनती है, सारे जने सुनते हैं, ऐसे मरीज भी रहे हैं इन्होंने, पर मैं हूँ मैंने डॉक्टर साहब ने वधिया बनाता। पर थोड़ा स्टाफ बहुत वधिया डॉक्टर साहब, स्टाफ बहुत वधिया। और जे गल करा राधिका की गल करा, राधिका भावें तुम झिड़का भी मार लो मैं मार ला, कोई बेचारी उत्थे स्टैंड करती रहती है। बहुत वधिया ये बड़ा अच्छी डील है क्योंकि जे जरनैल लड़दा ना तो फौजा के सिर पर लड़दा है। तो बहुत वधिया तुहाडा स्टाफ है, उन्होंने प्रेस करने की साडा एक जो बनता है क्योंकि जो चंगे काम करता उसकी वडेल करनी चाहिए है। तो दूसरी गल ये है कि एक होर बहुत बड़ी खासियत है डॉक्टर साहब से। वैसे मैं छेती प्रेस नहीं करती किसी की, मैं इन्होंने पता हुशियारपुरियों को मैं जल्दी प्रेस नहीं करती, इन्होंने पता मैं वो नहीं प्रेस करती जो बंदा सच्चा तो सुच्चा हो। और डॉक्टर साहब सच भी बोलते हैं तो जो पेशेंट गरीब है उसकी फटाफट ही मदद कर देते। जिस तरह डॉक्टर ने मेरे वीर ने एक गल कही है हुशियारपुर तो मेरे बहुत नजदीकी आ जो काम मेरा भी ये काम हो गया कि जिन्हों कोई बीमारी हो ना हार्ट की तो मैं कहती डॉक्टर जसवाल कोई जाओ क्योंकि साढ़े कई पेशेंट है शायद डॉक्टर साहब को नहीं पता, मैंने जाके दसते हैं कि डॉक्टर साहब ने साढ़े नाल बड़ा वधिया ट्रीट किया और असी ठीक हो गए। इस करके बहुत डॉक्टर साहब साड़ी धन्यवादी है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। परमात्मा तुहानू लंबी उम्र देवे, तुम सारे लोगों की सेवा करते रहो। तो दूसरा नाल नाल मैं अपनी भैन की भी गल करनी है कि वो साथी भी बहुत वधिया मिले तुहाडे, साथी भी बहुत वधिया। गड्डी के दो पहिए है ना जो कट्ठे चलते हैं तो फिर वधिया रह जाता। गड्डी के पहिए बहुत वधिया, परमात्मा तुहाडे ते कृपा रखे। तुहाडे बच्चे भी बहुत वधिया क्योंकि बच्चे भी इन्होंने अमेरिका च रहिंदे आ, वो भी बहुत वधिया। पैसा नाल नहीं चलता, पैसा इत्थे ही रह जाता। जिहड़ी सेवा है तुहाडी वो हमेशा लोग याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, परमात्मा तुहाडी लंबी उम्र करे, तुसीं लोगों की सेवा करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सारे का, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। लंबी उम्र की फिर दोबारा कामना करनी है कि परमात्मा तुहानू लंबी उम्र देवे ते बच्चे तुहाडे जिहड़े अगे बड़े इंटैलीजेंट आ उन्होंने भी लंबी उम्र देवे। बहुत बहुत थैंक यू। ये डील तो बहुत अच्छी हुई, इतनी अच्छी टॉक दी और आपने, और साथ में आप लेके जा रहे हैं बहुत सारी दुआएं हम सब की तरफ से। डॉक्टर हरिंदर जी हमारे बीच में है, एक एडवान हुए हैं, प्लीज आइए स्टेज पर। वी लव टू हियर यू। ततो गुरुजनान् सर्वान् प्रणमामि पुनः पुनः। ये शाम तक प्रभावेन विश्वशास्त्रम प्रवर्तते। गुरुजनान् सदा ही प्रणाम है, जिन्हां दी एग्जिस्टेंस के कारण असी सारे एक हार्मनी च रहंदे हैं, एक हेल्थ दे विच रहंदे हैं। सानू मौका मिलिया है दर्शनां दा। Myself, Dr. Harinder Singh, as a Ayurvedic medical profession to है, पर साथ ही around 99-2000 के बीच सानू उन्होंने ओपीडी से नाल बैठने का मौका मिला है। उस समय तो गुरु होवे तब वो जी महक है वो सारे दे विच समा जाती है। सानू सारे नाल बैठ के कोई, क्योंकि साडा जिहड़ा फील्ड है वो मॉडर्न साइंस का है ते इस समय जो आयुर्वेद का फील्ड है वो काम करना ते उत्थों जी चिकित्सा पूर्ण कदों होती है। शास्त्र के कहा है जो एंशिएंट फिलॉसफी है
फिजिशियन ने सर्वोपरि कह गए थे। तो साढ़े फिजिशियन उन्होंने नाल जिहड़ी सारे टीम वर्क है परिचारक अटेंडेंट्स और साडी जिहड़ी एंटायर टीम है उस तो बाद औषधि जो साडे जिन्ने भी इक्विपमेंट्स ने साडे स्टैंड्स ने हर एक चीज है चिकित्सक परिचारक औषधि ते फोर्थ है अटेंडेंट जिन्ने भी सारे इत्थे सादा एक परिवार एक सादी फुलवारी इत्थे हाजिर हुई है उन्होंने देख के तब की गल है ये शाम तक प्रभाव ये जो फिजिशियन ने इस तरह के सारे मिले ने इस जन्म के फिजिशियन नहीं है एक फिजिशियन कई जन्मों तो चलिया है ते उन्हां जन्मों की कमाई सारे परिवार के विच खुशबू आई है ते सारे परिवार को पिता जਨਾਂ को सारे को बहुत बहुत हृदय से नमस्कार है ते साडी ये यही आस है कामना है कि सर गुरमुख बुढ़े कदे होवन ना है जिन्हां दे हृदय के अंदर प्यार होता कदे बुढ़े नहीं होंदे ते रिटायर भी नहीं होंदे जी वो यही कामना करते हैं कि सर साडे हमेशा ही उन्हां दी ता उम्र बहुत ही सेहतियाती दे नाल होवे ते सारियां को उदों तक सानू सुख रखण दे विच हेल्दी रहण दे विच साडी सेवा तत्पर रहण ते सारे परिवार को सारे फोर्टिस दी एंटायर टीम नो इत्थे आए सारे पतवंते सज्जनां को सारियां को बहुत बहुत बधाइयां बहुत बहुत नमस्कार सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक यू आपकी दिल की बातें सुन के ये लग रहा है कि तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई का दिल लगा हुआ है आई थिंक डॉक्टर जसवाल के साथ चेहरे पे जो नूर है वो साफ दिख रहा है और एक नूर और हमारे चेहरे पर आ रहा है बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड इमेंस ऑनर दैट मिस्टर अभिजीत सिंह zonal director FORTIS Healthcare Limited has joined amongst all of us. Please welcome him on the stage with a big thunder of applause. Thank you. Sir. Thank you. Good afternoon to you all. Before I say something, something that Mr. Diwan had said. Mr. Diwan said, Dr. Jaswal, he spoke about how good looking he is. So, Diwan sahab, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ हेयर स्टाइल के अंदर कुछ फोटो नहीं देखी है. Okay, so thank you everyone. सारे लोग अपना संडे को आए हैं for coming here for this talk. We are really humbled as a hospital to see so many people over here. It's not only that Dr. Jaswal and Logan treat that, but it's also the connect that he has with all his patients that they've come here and they've spoken so highly about the hospital, about Dr. Jaswal and his complete team. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ इसका तो उस टाइम we were the only hospital जिथे cardiac treatment available सीगा maybe 2-4 hospitals हुए थे. आज की डेट के अंदर सब जगह जेडी भी गए कैथ लैब खुल गए हैं सब जगह कार्डियोलॉजिस्ट हैं. But what I would like to say is that all cath labs, all cardiologists, they are not the same. So today we had examples. We had a couple of brigadiers speaking and मैम ने भी फौजी का एग्जाम्पल देता. So मैं एज अ लेमैन मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तरफ सारे को लाया कोई स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर है जिनको कमांडो भी कहते हैं with all the training of all the latest weapons, sniper rifles, automatic weapons, anti-tank, whatever. And then the other side you have a home guard, with a 303 rifle. So you have to decide whether मेरे को मेरी disease का किसी ने ढूंढना है तो do I want a special services person to do it or would a home guard at that moment do it? So fortunately for us, Dr. Jaswal, with all his experience, he has the best equipment available. So आज की डेट के अंदर अगर तुसी USA भी चले जाओगे ट्रीटमेंट की जो भी इक्विपमेंट चाहिए होगा फॉर ट्रीटमेंट that is available with Dr. Jaswal. आज एक चीज रह गई है जो we are adding very soon is laser treatment. So again, I think with that there will be nothing else which will be available in any advanced country, in any advanced center which Dr. Jaswal does not have in armamentarium. मैं एक एग्जांपल बताऊं साढ़े एक पेशेंट आए थे अपने डिस्कशन रही है ਜਿਹੜਾ ਹੈ आफ्टर द डिस्कशन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ECMO ਚਾਹੀਦਾ है. ECMO is
सो फिर उन्होंने अपने हॉस्पिटल में चेक किया, उन्होंने हॉस्पिटल में बोला कि हाँ जी असी दिल्ली मंगवा लांगे। सो असी क्या ठीक है, आई मीन इफ यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट, बट पेशेंट द फैमिली दा क्वेश्चन ये सीगा कि तुसी मंगवा तो लोगे पर तुसी पहले केस कीते हैं नहीं कीते हैं, कितना का एक्सपीरियंस है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल होए, टेक्नोलॉजी यूज की होए, नॉट सिंपली सेइंग कि सारे कोल टेक्नोलॉजी। So we are fortunate that we have Dr. Jaswal. I don't think there is any technology which is available that he's not done for मतलब in terms of volume, sheer volumes, जितना experience होना है ना किसी का। So with that, thank you sir, thank you for conducting this wonderful program, and we hope to continue meeting people, continue to make sure that people get the right advice and the right treatment. Thank you and wish you all a very good day. Thank you very much for sharing these beautiful insights with us and of course your views. All right, well, जब हम इतने सारे लोग दिल से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? हाथ खड़ा करेंगे एक बारी और दूसरा हाथ में खड़ेगा और दोनों हाथ से ताली बजाएंगे because we are one big family now. बहुत बड़ा सा परिवार है कि नहीं है? तो ये तो जायज़ सी बात है ना कि जो डॉक्टर जसवाल के बेस्ट हाफ हैं, डॉक्टर रितु जसवाल, जिनका बर्थडे आने वाला है, तो हम वो सब मिलके इकट्ठे बनाए यहाँ पर। What say? So let's have a surprise cake for ma'am, please. Please केक लेकर आए आगे और हम सब मिलके इकट्ठे यहाँ पे will do a little cake cutting ceremony for Dr. रितु जसवाल. ये मिठास इनके जीवन में यूं ही बनी रहे और इसी तरह ये मिठास दूसरों की लाइफ में, जैसे कि हम इतने सारे टेस्टिमोनी यहाँ पे दूसरों की लाइफ तक पहुँचे। Wishing Ritu ma'am a very very happy birthday in advance. All right, here we go. Many congratulations and celebrations ये सबकी तरफ से, सबके साथ मिलकर ढेरों शुभकामनाएं and many best wishes to Dr. रितु जसवाल. हम तो ये कहेंगे ये जोड़ी यूं ही बनी रहे, सदा बनी रहे, because what a powerful couple this is. हम मुंह मीठा कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारा मेल मिलाप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे से मिलके। आई एम श्योर हम सबको अब भूख भी लग गई है क्योंकि वो भी जरूरी है। So we will soon proceed towards the lunch that awaits all of you. आप सभी के लिए लंच की पूरी तैयारी। Brought to you by Dr.
Dr. R.K. Jaswal and team. And of course, FORTIS Hospital takes immense pleasure